केमती सजेकी लिखिया हां केमती ऑर्डर रे मतलब रिजल्ट को फास्ट केते एटा कते 11 हबो नेक्स्ट एटा हबो माइनस -9 -9 then next एटा तो सर लास्ट तो ट्रू फॉल्स टाइप रो किछ लागु हां बुलियन वैल्यू ट्रू फॉल्स ही रिटर्न करियो हां ट्रू 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 अछि फास्ट टा ठीक कहि दिलो सेकंड टा भूल कहिलो थर्ड टा भी ठीक कहि दिलो सेकंड कोन है लागी एटा को 6 into 3 18 18 minus 5 18 minus 5 13 एटा केते करलो 28 divided by 7 2 2 ओहो मते लागला 28 by 2 plus 5 और 28 by 2 जदी हो देन 14 plus 5 हैला बेल को 19 केते हां 19 minus ये हला 13 हां 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 ना मते 28 by 7 लागला find the result of the following expression या माने कोन सर माने जो ट्रू फॉल्स रिटर्न करियो ओहो हाँ 5 is greater than 2 5 is greater than 2 true 12 by 4 होचे 3 is greater than 2 true fast 2 after 2 then second टा three is equal to 3 true 15 is greater than -2 -2 true second भी true होगा is a question and answer is given write a pseudocode that to evaluate the following mathematical expression one is result equals to n into n minus 1 divided by n रे जो डिवाइडेड बाय n टा सेटा एक्चुअली कहा से तो डिवाइड होबो से n टा माने n - 1 से तो डिवाइड होबो आ टोटल से तो डिवाइड होबो a result total से n square minus n divided by n टा multiply हो ना n square minus n divided by n square minus n by n begin numeric n result n accept n numeric n result n accept n compute n result n compute compute माने का हां मैं तो कंप्यूट लिखूं ना
ନା ଆମେ ଇଏ ଲେଖିବା ଯୋଉ ନ ଲେଖିବି ଚଳିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିପାରିବା खाली n result equals to ଯେମିତି normal ରେ ଲେଖୁ ଆମେ ଇଏ ହବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। star n minus 1 by n Consider an example where two values have to be accepted from a user. Okay. The value have to be then compared and a result indicating whether they are equal or not has to be displayed. So it is a flow chart has given. Start numeric number 1, number 2, then accept n number 1 and n number 2. That is accept the number. Then condition has checked here. Is number 1 is equals to number 2? If condition is true, if it is yes, then display numbers are equal. If it is no, display number are not equal. Okay. sir if it is no display number or not equal এটা তো display box হবা কথা না हाँ এটা display হবে Okay, so এটা আমরা দেখেইব जो এটা display box হবে বুঝলা ଆଜ୍ଞା display numbers ଆଉ ଗୋଟେ ବି sir question କଣ ଗୋଟେ କରିଥିଲା ସେ ମାନେ compare କଲା ପରେ ये क्वेश्चन देख Consider an example where two value have to be accepted from a user. The value have to be then compared and result is indicating whether they are equal or not. Has to be displayed. এটা তো তাহলে নরমাল ফ্লো চার্ট না আমি ଏବେ যেটা দেখিলে हाँ এটা কন্ডিশনাল বা सर से जो ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स होतला जो हमें जोटा पढ़े नथिले लास्ट क्लास हाँ এটা হচ্ছে লজিক্যাল অপারেটর সেটা স্যার সেটা কোউठी মানে লগেবা ଆମେ মানে সুডো কোড লিখলা বেলে না কোউठी ସବୁଠି ୟୁଜ ହବ ଯେତେବେଳେ ତମେ ମଲ୍ଟିପଲ କଣ୍ଡିସନ ଚେକ୍ କରିବ ଏଠି ଆମେ କଣ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଚେକ୍ କରି ଦଉଛେ ନା ଯଦି ଆମେ ମଲ୍ଟିପଲ କଣ୍ଡିସନ ଚେକ୍ କରିବା ସେଟାରେ ୟୁଜ କରିବ ବୁଝିଲା ताकू केमती लिखा हबो तो तारो अलगा पुनी माने फॉर्मेट थिबो ताकू लिखिया पय का बोला माने से जो कंडीशन चेक जदी हबो जो जगह भी कंडीशन चेक हबो सेही कंडीशन गुडा को लिखिया पय तो अलगा फॉर्मेट थिबो नहीं नहीं यही हमारा डिसीजन बॉक्स रे लिखा हबो जो फ्लो चार्ट रे लिखिबा फ्लो चार्ट हले डिसीजन बॉक्स रे हां आउ अछि हमें सुडो कोड रे आगु अछि हमें लिखिबा जो तदरे इफ कंस्ट्रक्ट फॉर लूप ये सब यूज हो पढ़ी ना आगु पढ़ी ओहो
while writing a pseudocode, you can check for the condition by using decision making construct. For checking the decision making construct, we're using if construct, switch case construct. Okay, we're using if construct and switch case construct. These are the two constructs we're using for checking the conditional construct. One is if construct. It specifies the conditional expression that needs to be evaluated. Okay, it specifies the conditional expression that needs to be evaluated is one of the following type. One is simple if construct, if else construct, and then nested if else construct. Okay. So if construct is of three types. One is only simple if, means it is checking the condition. If your condition is false, then nothing will be executed. If your condition is true, then statement within the if block is executed. Then if else block is what? Now it will first check the condition. If your condition is true, statement within the if block is executed. If your condition is false, then else block. और जो if this else this जो लिखा हुआ है प्रोग्राम गुड़ा रे हाँ हाँ बुझेला आज्ञा नेस्टेड इफ एल्स रे कोन होचे नेस्टेड इफ एल्स ले गोटे कंडीशन भीतर आ गोटे कंडीशन हम पास करी तादरे कोन माने गोटे इफ भीतर आ कोन इफ रखी हबो हां गोटे कंडीशन सैटिस्फाई होला तापर आ गोटे कंडीशन भीतर गला जेमती मु कोन हेबी ना गोटे गेम रे रैंक 1 हेबी केमती ना मु लेवल 1 क्रॉस करबी ता पर लेवल 2 ता पर लेवल 3 गोटे कंडीशन ता भीतर आ गोटे कंडीशन ता भीतर आ गोटे कंडीशन हां 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 सेटा पुनी लेखा केमती हबो अछि आगु सब पड़िबो सेटा एमती नेस्टेड इफ एल्स यूज कर पाइबा नेस्टेड इफ एल्स को अवॉइड करिया पे हमें लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर परिया जे एंड और नॉट यूज कर परिया हां 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 आ खाली इफ सेमती कोन गोटे लेखा है पारे की खाली इफ रहिबो आइदर कंडीशन ट्रू हो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जे कंडीशन फॉल्स होला किछ एग्जीक्यूट करिवो यस सर a simple if construct. In a pseudocode, a condition can be evaluated using the simple if construct. So how it is possible? Now first we define if, then condition. Okay. Then the statement that you want to execute. The statement to be executed if condition is true. Okay. begin and end कोन if condition परे रहइबो माने one is when you write the total construct माने हम यदि main block begin जो pseudo code लिखिबो सेटा begin और end भीतर रहइबो ता भीतर if रहइबो if जो स्टेटमेंट में पास करबा से स्टेटमेंट बिगिन और एंड भीतर तमने तो एमती हले जदी गोटे सुडो कोड रे माने इफ प्रेजेंट थिवो ताल तो सठी दीटा बिगिन दीटा एंड रहइला ताल हां माने गोटे तो मेन ब्लॉक रहइबो ना मेन ब्लॉक रे बिगिन एंड एंड रहइबो मेन ता मझरे भी गोटे बिगिन एंड इफ पर रहइबो हां हां For example, the following pseudocode segment compare the two number. Begin and end, it is a main block.
then if number 1 is equals to number 2, okay, if the condition is true, then it is showing you display the numbers are equal. तापर बिगिन लेखिकी डिस्प्ले करके एंड करा हो. Then if else construct. The if else construct can be represented in a pseudocode as in the following segment. First is if condition. Okay, first it will check if condition means if, then condition that you have to take begin and end statement. Then else block, begin and end statement. ओ एल्स पे भी बिगिन एंड एंड था. Else can be the begin. हां जदी एटा न होला सेटा से इफ आउ एल्स रो ये हो. Consider an example of a pseudocode that evaluate whether a number is even or odd. Let's see the dry run table of the pseudocode. Begin numeric n num. We're defining a variable. Then display enter a number. The user is giving some value. Then accept a number if number modulo 2 is equals to 0. Okay, the value तो that सेटा ब्रैकेट रे का रहला if condition टा रहियो bracket भितर. ओहो हां एगोटा पार्ट रहियो. The number that you have taken, if it is equals to 0. If it is yes, then display the number is even. Or else it's showing you the display the number is odd. एटा एमते जेमते थाक हेची माने पूरा स्टार्टिंग ऑफ द बिगिन टू एंड रे सेमति कोन हमकु भी थाक करी लिखिर अछि. हां एटा होची इंडेंशन माने तुमे जदि एटा को भलसे सिखि जीवो तुम्हारा पाइथन लैंग्वेज अगा हे जीवो. ओहो It's just like अच्छा एटा रो भी किछोटा अछि माने केमति लिखा हो पूरा. it is called the indentation. हां एटा जदि तुमे भलसे एटा फॉलो करि दोछो, then when you write a python programming or जब एक python कोर्स करियो, it becomes you easier. मैं हैंडल कर दूंगा. Okay. Yes sir. Then begin numeric n num
So when you are defining a memory, it is allocating a memory or memory location where you store the value. Hmm. Then accept a number. Hmm. So we are accepting a 4. So 4 modulo 2 is equals to 0. Hmm. Yes. This is, then it is showing you the display the number is even. Hmm. सर आगे फ्लो चार्ट बने कि सुडो कोड लिखते ना कि सुडो कोड लिखि फ्लो चार्ट बनाती ये होची तीनटा टूल माने एल्गोरिथम ने तमे लिखि परिबो फ्लो चार्ट लिखि परिबो सुडो कोड लिखि जोडा तमे यूज कर परिबो the number is even. Begin numeric and norm for defining a memory. Then we stored 9. So 9 modulo 2 is equals to 0. not zero. No. Condition is false here. False. Okay. Hmm. Then it is going to the else block. Hmm. The number is odd. Okay. Then nested if else construct. Begin if condition. Okay, then begin and end. The statement to be executed if the condition is true. Then else block. Nested if. Okay. If condition begin and end, then else block. In else block, it is also contained a begin and end. If else block is present, then in else, then it is also contained the else block. माने एठी कोन रहला if condition जदि मोर condition true न हला रहला else block को जीवो else रहला else भीतर भी कोई condition अछि अच्छा else भीतर भी if condition अछि condition से condition check हो जदि true न हला else भीतर आउट else block अछि ओहो से execute हो हला तापर else block केनी end ओ nested माने जाली जाली भली आइथिबो गोटे भीतर गोटे जमते थिबो बुझियला यस सर consider तो यार किछ एग्जांपल अछि consider another example
where the discount percentage on a TV needs to be decided on the basis of TV type. If TV is CRT, the discount will be 5% of selling price. If TV is LCD, then the discount will be dependent upon the size of the TV screen. For 14-inch screen, the discount is 8%, and for 21-inch screen, the discount is 10% of the selling price. The color is what? CRT, size is not given, discount is 5. It is a table. LCD, if it is 14 size, then discount is 8. LCD, if size is 21, discount is 10. 10. So here we define numeric end screen, discount and selling price. By defining a screen size, discount and selling price, then character C type. Accept C type, accept selling price. सर सी टाइप आमे देखथिले जो माने एटा होची CRT और LCD TV type. हां सीआरटी पई सी थिला एलसीडी पई एल थिला If C, then discount is 5% of selling price direct लिखेदेला. जदि C नहीं else, begin if else भीतर पुनी रहला if block. Begin if C type is L, then begin accept screen size, accept end screen. If the screen size is 14, then discount is 8%. If screen size is 21, then discount is 10%. Okay. The end of all. बुझेगा? स्टार्टिंग रे जो इफ स्टेटमेंट रहला फर्स्ट इफ स्टेटमेंट माने सीआरटी पई जोटा रहला हाँ CRT तो गोटे CRT है ना तदरे फ्लैट दे दला 5% डिस्काउंट
अच्छा 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 if else ଆଉ तापरे एलसीडी ପାଇଁ तार स्क्रीन साइज दरकार स्क्रीन साइज एलसीडी ପାଇଁ तो स्क्रीन साइज हाँ सीआरटी ପାଇଁ କିଛି नथिला माने गोटे फिक्स्ड परसेंटेज थिला एटी जदि मोर स्क्रीन साइज 14 रहउची ताले डिस्काउंट देला 8%, यदि स्क्रीन साइज हम्म 41 रहउची डिस्काउंट देला 10%। बुझला? यस सर सरला पुणी काली पड़िबा नेक्स्ट क्लास ना यस नेक्स्ट क्लास केबे काली 9:30 रे काल सकाळ यस थैंक यू सर